Welcome everyone to the Mind, Body, and Soul television show. We are doing a special edition this evening. I'm your host and moderator, and also the founder of Conscious Evolution Media and the Mind, Body, and Soul television show. We have some great guests with us this evening. They're joining us from Minnesota, and they are returning guests, Swami Manjulanand and Padmaja. Welcome to the show. And what we're going to talk about today, well, we're going to talk about a lot of things, but uh, the main theme of the show today is how to fulfill our desires. And we're also going to touch on health and wellness and meditation. And all of these things are becoming more and more, I think, coming to the mainstream, which is great news for all of us, isn't it, Swami? Um, People are actually, I'm noticing that people are meditating more and more, and people are uh, open to really fulfill why they came to existence on this planet. So help us understand a little more about how do we fulfill our greatest desires, what we really came here to do. हम अपने इच्छाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमको डिटर्मिनेशन करना होगा. The first thing is to fulfill our desires, we have to be determined. और इसके लिए हमको अपने साउथ एरिया को, होम या ऑफिस के साउथ एरिया को ऊंचा और हैवी करना. For this, we have to make our south area of the living area higher according to the Vastu principle and heavy. And then the north areas will be lower and like that. And the northern area of the house should be in the lower and lighter. क्योंकि हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा ईस्ट से आती है और नॉर्थ से. Always the positive energy comes from the east and towards the northeast. तो अगर हमारा वो वाला हिस्सा ओपन होगा तो हमारा पॉजिटिविटी लेवल बढ़ेगा. So therefore, from the northeast, if it's in the right way, lighter and open, positive energy will come to us. और ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे डिजायर को जो है फुलफिल करने में काफी बड़ा रोल प्ले. And the positive energy is responsible for fulfilling our desires. तो उसके लिए हमको. So what does he mean by lighter and heavier? Help us clarify that. Lighter means no heavy construction on the zone of north or the east. This means the lighter, and the construction should not be very higher at the zone of the north or the east. So Swamiji is saying from the north and the northeast area, it should be open, and there should not be no heavier objects and no construction on that side compared to the south. Oh, okay, got it. So if somebody wanted to put their garden to the north, behind the house, is that a good place for a garden? अगर अपना बगीचा नॉर्थ की तरफ करना वो अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, तो वो तो that is the very good positive thing. Yes. Garden is very good and the positive things. Garden in the north area brings good things. Oh, okay, great. All right. Okay, so let's talk also a little bit more about health and wellness. So I'm experiencing here in this country, you know, I don't know about any place else, but drugstores are going up at every corner, meaning that you know, we have figured out somehow that, you know, how to make our lives, how to live longer, but our quality of life is going the other direction because everybody is taking pills these days, and
and going to all these drugstores to get anywhere from a dozen to 20 drugs that most people between their 60s and 80s are taking these days. What can we do to keep our health in check and not rely so much on drugs? हम अपने यहाँ बहुत सारे ड्रग स्टोर्स देखते हैं 60 to 80 वाले 10 to 20 ड्रग्स लेते हैं, तो हम किस तरह से उनके सहारा ना लेके किस तरह से हम अपना हेल्थ को बनाए रखें? This is very important question because in the age हमको एक उम्र आने के बाद काफी ड्रग लेनी पड़ती है. Yeah, it is true that after certain age we are prone to take more drugs to keep our health in check. इसके लिए हमें हमारा जो 5 एलिमेंट्स हैं, For this, the 5 elements, हमारे होम के जोन में जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर होता है, and the zone of the southwest corner in our house, वो हमारा पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट करता है. the southwest governs the earth element, और वो हमारे हेल्थ को भी गवर्न करता है. and it also is responsible for our health. इसके अलावा हमारा साउथ जोन भी हमारे हेल्थ को करता है. And besides this, the south zone of the house also affects our health. होता क्या है कि अमेरिका में ज़्यादातर मास्टर बेडरूम जो है नॉर्थ में या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में होते हैं. Swamiji is saying that in America, most of the bedrooms are in the north or the northeast. वहाँ पर रहने से हमको अधिक बीमारियाँ आती हैं. If we live in that zone, we get prone to more unhealthy or disease state. Mine is on the west. Oh, West is also good, but not very good. West zone is the southwest or the south. Okay. Yeah, both zones are very good for the healthy life. But my bedroom is actually looks to the west, but my bed looks to the south. Oh, yes. अगर आपका वेस्ट में आपका रूम का जोन है, तो आपका बेड अगर बेडरूम के साउथ में है, तो भी आपका बेटा रिजल्ट मिलेगा. So if your bedroom is in the west and your bed is in the south zone, then it is good. Yeah, and you gain better result. So you will retain your health and be healthy. लेकिन इसके अलावा हमें ये भी करना चाहिए कि हमें अपने बेडरूम के जो वॉल्स हैं, जो हमारे पूरब और उत्तर की वॉल्स, वहाँ पर अधिक फर्नीचर नहीं लगाना. Another thing Swamiji is recommending is in the north and the east corner of your corner walls of your house. Bedroom. Do not keep any heavy furniture and keep it open. क्योंकि इसके रहने से जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अधिक फ्लो करेगी. And the positive energy will flow this way if you keep the north and the east walls of your bedroom open. और इसके अलावा हमको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो साउथ ईस्ट के जोन में लगानी चाहिए. And remember to keep the electrical equipment in the southeast zone. और इस तरह से एक आपका रूम अगर वास्तु के अकॉर्डिंग हो जाएगा, and this way your room will follow all the vastu principle, तो निश्चित रूप से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. And the energy flow will be good, positive energy, and your health will be good. इसके लिए हमें ये भी करना चाहिए कि हमें बेड के पीछे कोई सपोर्टिंग भी फर्नीचर होना चाहिए. And also head. Also, Swamiji is saying with your bed you should have a headboard that will support and that will help you also. क्योंकि जो हमारा नॉर्थ और ईस्ट से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आ रहा है, उसको वो रोकेगा और वो हम पर रिफ्लेक्ट करेगा.
The reason Swamiji is saying is from the north and the east, when the positive energy is coming, if you have a headboard on your bed, it will stop and it will flow the positive energy onto you. तो इस तरह से करने से हमारे हेल्थ में इम्प्रूव होगा और हमारी हवाई हमको काफी फायदा भी करेगी. And your health will also improve, and also if you are taking medication, it will also enhance the effect and you will be much healthier. इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि हम लोग मकान के सेंटर में कुछ हैवी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं. Besides these things, we have to observe that in the center of our house, we are not keeping any heavy stuff, and we are keeping that zone lighted and empty and open. क्योंकि अगर हमने सेंटर में कोई हैवी कंस्ट्रक्शन कर दिया तो हमारी हेल्थ जरूर खराब होगी. And if we have in the center of the house any heavy construction, Swamiji is saying it will affect our health and we will not be feeling good. और ऐसे मौकों पर डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते कि कौन सी बीमारी है. Swamiji is saying doctors will not realize what is problem with the person. तो इस तरह मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग आपको बताया. So Swamiji has told some of the things according to Vastu principles. Okay. Do you recommend that people keep televisions and computers out of their bedrooms? वो पूछ रहे हैं कि टेलीविजन और वो सारे इक्विपमेंट के बेडरूम में रख सकते हैं. एक्चुअली टेलीविजन रखने से कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं. If you keep television in your bedroom, there are some practical problems. कभी-कभी चैनल को लेकर पति के बीच में लड़ाई झगड़े से हो जाती है. Swamiji is saying that because of switching channels, there will be fight between husband and wife. तो इसलिए वास्तु रिकमेंड करता है कि अगर हो सके तो टेलीविजन को जो है वो अपने लिविंग एरिया में रखें. So according to Swamiji, better to have your television in the living room, not in the bedroom. लेकिन अगर जरूरी हो तो उसको फिर साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के कोने में लगाएं. Yeah, south east or northwest corner of the bedroom, you may have it in case you want to. What about colors? Do you get into different colors that we should be painting the walls, and colors that we should be using in different parts of the house? Colors कौन से parts में? Actually, color का रोल काफी महत्वपूर्ण होता है. Colors play a very significant role. लेकिन ये वहाँ के रहने वालों की पसंद पर भी आधारित होता है. And it also depends upon the choice or the taste of the person who is living there also. क्योंकि केवल वास्तु के अकॉर्डिंग कलर बताने से अगर वहाँ के रहने वाले को वो कलर पसंद नहीं है तो वो कलर फायदा नहीं करेगा. And according to Vastu, if you suggest some colors for the house and the person living there doesn't like those colors, then it will not be beneficial. तो इसलिए कलर को हम क्लाइंट की पसंद के अनुसार वहाँ पे बता करके फिर सजेस्ट करते हैं. So Swamiji suggests according to the client's taste for the color and also taking into Vastu principle both aspects. He suggests balance of colors. तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन करके. So Swamiji takes the combination of Vastu principles and the taste of the person who is living in the house and then gives the recommendations. Okay. All right. So let's talk about water. Do you recommend, and if you do, a lot of people these days like to put large amounts of water. Like I've seen some homes recently where there's actually a pond inside of the house. Do you recommend that? Yes, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है. This is a very and what kind of energy does water has that it has effect on people? यहाँ पर कभी-कभी लोग घर में नया स्विमिंग पूल बनवा लेते हैं, नया कंस्ट्रक्शन कराते हैं.
Some people in the new constructions, they do have pools in their house. और वो पूल बनने के साथ ही उनको उनके ऊपर परेशानी का पहाड़ फूट पड़ता है. And also they undergo a lot of difficulties also. क्योंकि पूल बनवाने में वाटर एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. So if you have a pool, water element has a significant role to play. और अक्सर पूल जो है वो साउथ जोन में बनवाए जाते हैं. And most of the time in US, the pools are constructed in the south zone. और साउथ जोन में गड्ढा होना, बिलो लेवल का फ्लोर होना और वहाँ पे वाटर एलिमेंट होना, ये बहुत ही दिक्कत का कारण होता है. So in the south zone, if you have a lower area under dug area and also water element, it's going to affect the person who is living there into a lot of difficulties. Lot of difficulties, like a financial and a health problem and many problems. तो इसलिए हमको हमेशा पॉन्ड और द पूल जो है वो ईस्ट जोन में बना. So Swamiji is recommending, if you want to have the water element of pond and pool, please construct in the east side of the house. और द नॉर्थ ईस्ट. Or northeast side of the house. और वैसे तो अपना नॉर्थ में भी हो सकता है. And also north can also be possible. Okay. What about how important is it how the main entrance to the home is designed and constructed? And what I'm talking about is, a single door, a double door, a French door, and once you open it, what is it open to? अगर मेन दरवाजा घर का किस तरह का होना चाहिए? वास्तु recommended double door. Swamiji is saying Vastu principles recommend double doors to the entrance of the house. And there should be one hang. What is your chaukat? Okay, so there should be like a entrance lobby to the main door. Not lobby. Railings? No. नहीं चौखट आपका फ्लोर पर एक वो भी होनी चाहिए पतली सी पट्टी डोर के चौखट में नीचे की ओर भी जमीन पे भी एक पट्टी. Yeah, there should be an extended area in front of the door and not with the stairs. One something एक चौखट नहीं होती दरवाजे के नीचे वो. Oh, there should be a raised platform in front of the door. Raised from the wooden raising from the door. Yeah. In front of the door, there should be a raised platform, a little, not very big. 1 inch. 1 inch. 2 inch. Not the platform. It's like a framing of wooden framing. Yeah, wooden framing to the door. You see this most of the time in the South India. Yeah, this type of wooden framing, and 2 doors are very best for the entrance. Okay, and is there a natural flow or how can we create a natural flow to the home in terms of what comes first as you enter into the home? Does the family area comes first? The dining area comes first. Where is the kitchen? Where are the bedrooms? Where is the playroom? Is there an order to these things naturally so that it flows? जब हम मेन एंट्रेंस से एंटर करें, when we enter from the main entrance, तब हमको सीढ़ियाँ बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ हैं. The steps should not be exactly in front of us. और पहले जाते ही हमको लिविंग एरिया मिलना चाहिए. As soon as you enter the house, you should see the living area. और वहाँ पर कहीं भी हमको टॉयलेट बिल्कुल फ्रंट में नहीं होना चाहिए. And there should not be any toilet in front of us. और किचन भी थोड़ा दूर हट के होना चाहिए, बिल्कुल आंखों के सामने दिखाई नहीं होना चाहिए.
And the kitchen area should not be seen when we enter exactly, but it should be on the side. और इस तरह से हमने ये भी होना चाहिए कि हमारा जो फ्रंट जैसे इंटर करे वहाँ पे कोई अच्छी सी पेंटिंग, पॉजिटिव पेंटिंग भी होनी चाहिए. And there should also be a positive painting when we enter the house. तो इससे क्या है कि हमारे इंटर करने वाले के मन में ना पॉजिटिविटी आएगी. The person who is entering into the house, then he will feel the positive energy and he will exuberate that. Okay. And what can we do in terms of make sure that we are open to our financial wealth throughout the house, so that the financial energy is also flowing? Wealth कैसे आएगा? Wealth. अगर Not just money, but all kinds of wealth. इसके लिए हमको नॉर्थ में जो कंस्ट्रक्टेड एरिया के नॉर्थ के एरिया में In the constructed area of the house in the north zone, हमको कोई आर्टिफिशियल फाउंटेन लगाना चाहिए. you can place a artificial fountain, और वहाँ की फर्श का लेवल भी नीचा होना चाहिए. and the flooring should also be level, should also be lower, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लीनिंग रखनी चाहिए. and you have to keep it very very clean. तो इससे हमारी वेल्थ हमको आना शुरू. So with that we'll invite the wealth into our house. और इसके अलावा हमें यंत्र होते हैं, उनका भी इस्तेमाल करके हम कुछ फायदा उठा सकते हैं. And using some other yantras or symbols of divine energies, we can invite wealth of various kinds. I have a preference for wood flooring, but a lot of people in this country really love carpeting. And what's your feeling about that? इस US में बहुत लोग कारपेट यूज करते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? फ्लोरिंग का क्या होना चाहिए? एक्चुअली कारपेट में काफी गंदगी कंज्यूम करती है. Swamiji is saying carpet consumes lot of dirt. लेकिन वो हमारी बॉडी की एनर्जी को पृथ्वी में इंटर भी नहीं होने देती है. And another thing is it will not allow our energy to enter into the earth. Energy. तो इससे एक पॉजिटिव भी है हमारे लिए. तो इसलिए कालीन कारपेट होना हमारे लिए अच्छा भी है. So there is one positivity and this is a good thing. तो इसके लिए हमको कारपेट की प्रॉपर सफाई करते हैं. Therefore we have to keep our carpets very clean. वैसे ये पॉजिटिव है हमारे वास्तु के. According to Vastu, Swamiji is saying carpet is positive as long as you keep it clean. Yes. Not easy, especially when people have dogs and cats and things like that. Very difficult. Yeah. So, okay, is there anything else that any other questions I didn't ask about our homes, about the design of the home that I may have missed? So can I'm sure I did. अगर हमारे हाउस में कोई डिजाइन में आपको और कोई कमियां हैं या कुछ और कर सकते हैं? हम सबसे बड़ी बात तो ये है. So the most important thing is कि हमको नॉर्थ जोन में और ईस्ट जोन में अधिक से अधिक विंडो और इंटर रखनी चाहिए. So north and the northeast zone we should have lot of windows and the light should be streaming in. और एंट्री भी अगर हो सके तो हमको नॉर्थ ईस्ट के अंदर. And if you want to enter your house, if you have an entrance in that northeast zone, it's also very good. और हमको जो है वो हमारा साउथ एरिया को हमको ऊंचा करने का प्लान बनाना चाहिए. ऐसा प्लान बनाएं जिससे कि हमारा साउथ एरिया ऊंचा रहे. And Swamiji is saying the south area zone of your house, make sure the level is higher and heavier in that area because it's an earth element is governing that area. तो इससे क्या होता है कि हमारे कुछ कमियां जो होती हैं घरों में वो ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं.
So if there is any defect, automatically by doing this, we are eliminating any vastu defects. इसके अलावा हमें ये भी करना चाहिए कि हमको कहीं ना कहीं पे फायर एलिमेंट का काफी काफी ध्यान रखना है, We also should keep in mind the fire element. क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग अपना अपना हीटिंग प्लांट जो है वो नॉर्थ ईस्ट के कोने में लगा देते हैं. In some cases, we keep our heating element in the northeast zone. तो नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो वाटर एलिमेंट को गवर्न करता है. Northeast zone is governed by water. तो अगर वहाँ पे फायर का एलिमेंट लगा दिया गया तो फिर हमारे घरों में फर्क. So if we put a fire element there, like the heating element, we invite trouble. तो इसके लिए हमको फायर मशीन जो है, हीटिंग प्लांट जो है वो हमेशा साउथ ईस्ट में लगा. So the fire element should always be kept in the southeast zone, which is governed by the fire element. ठीक है, that is some tips about. So these are some of the tips, Yes, Swami said. Oh, okay, great. Do you know if architects in the United States are they beginning to use these principles when they design homes? आप जानते हो कि आर्किटेक्ट इस कंट्री में ये वाले वास्तु प्रिंसिपल्स डिजाइन्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने में यूज करते हैं? नहीं, ये तो यहाँ के लोग इसका फॉलो नहीं करते हैं, आर्किटेक्ट. The architects in the US do not follow these principles. बल्कि कुछ उनके अपने प्रिंसिपल हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट हैं. Some of their principles the architects here use, Swamiji is saying, are opposite of Vastu. जैसे कि यहाँ पे मास्टर Go figure. जैसे कि यहाँ पे मास्टर बेडरूम अक्सर ज्यादातर आर्किटेक्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट कोन में बनवाते हैं. Most of the architects in the US make the bedroom in the नॉट बेडरूम, master bedroom in the northeast corner of the house. और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बेडरूम होने से पति में आपस में बहुत झगड़े होते हैं. So Swamiji is saying if you have a master bedroom in the northeast corner, the husband and wife will have lot of conflicts. हमने अपने रिसर्च में देखा है कि 80% केसेज ऑफ द डाइवोर्स उन लोगों के मास्टर बेडरूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट कोन में. Swamiji, during his consultation and experience, has noticed that 80% of the divorce cases, that family had their master bedroom in the northeast corner. तो ये पॉइंट जो है आर्किटेक्ट का काफी गलत है, तो इससे फैमिली काफी डिस्टर्ब होती है. So this design by the architect gives trouble to the family, and then they undergo a lot of difficulties. Wow, that's a lot of responsibility these architects have. I'm not sure that they realize it. Yes. So if somebody is watching this show, either right now live or later on as a replay, and they have a calling to integrate some of these principles into a building of a new home, how should they go about that? अगर ये वाले जो यहाँ पे लोग सुन रहे हैं और अपने घरों में ये वाले प्रिंसिपल्स करना चाहते हैं या नए में बनवाना चाहते हैं, कैसे वो लोगों को क्या करना चाहिए? वो लोगों को वास्तु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही बनवाना चाहिए. उससे किसी वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए और वो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं. The persons who are seeing the show live, they should consult the Vastu experts or Swamiji, whoever they can, and try to incorporate some of these points. इस पे हम वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान भी बनाते हैं, मैप भी बनाते हैं. Swamiji also helps design homes according to Vastu. और हम खुद भी उसका प्लान बना सकते हैं, बना के देते हैं. Swamiji also have designed and given plans for the schools and some other houses, customized homes. और फिर वो हमारे प्लान को लेकर के आर्किटेक्ट से कंसल्ट करते हैं. So then after seeing Swamiji's plan, they go to the architect and then they get the final design. Okay, great. All right, so
I think we're ready to talk about a little bit about vibrational meditation. Can you help us with a little deeper understanding of what do you mean by vibrational meditation, and maybe you could even take us through one? आप पहले वाइब्रेशन मेरे से बताइए कि क्यों आपने किया है और किस तरह फायदा होता है। यहाँ अमेरिका और यूरोप की कंट्री में लोग अपने घर को तोड़ करके मॉडलिंग नहीं करा पाते थे वास्तु के अकॉर्डिंग। So in the US and Europe and many other countries, people cannot, deconstruct their houses and make new ones according to Vastu. According to Vastu. Now, because here county rules and regulation is very strict. Because the county rules and regulations are strict and they have defined. तो वास्तु के डिफेक्ट कैसे दूर किए जाएं, ये हमारे सामने समस्या है। So the main problem came, how can we incorporate Vastu principles? तो इसके लिए हमने वाइब्रेशनल मेडिटेशन का जो है वो स्टार्ट कराया। So therefore Swamiji proposed a vibrational meditation. इसके लिए हम व्यक्ति पे पहले पॉजिटिव एनर्जी की कवरिंग करते हैं। Swamiji showers positive energy on the person who is interested to learn vibrational meditation. इसके लिए हम उसके सारे चक्रों को पहले क्लीन करते हैं। Swamiji first cleans all the chakra of that person. इसके बाद उसके चक्र प्रॉपर वर्क करने लगते हैं। So when the chakras start working properly, वो पॉजिटिव एनर्जी को सक करना शुरू करते हैं। And they start sucking the positive energy. और उनके वाइब्रेशन भी प्रॉपर होने लगते। And they emit proper vibrations. इसके बाद उनको जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उनका मेडिटेशन प्रॉपर होता है। So when they sit in meditation, they emanate positive energy. और तब उनका मेडिटेशन प्रॉपर वे में हो सकता है। So then that's how they learn how to emanate positive energy through vibrational meditation. इसके अलावा वो तब मेडिटेशन करते समय उनके जो वाइब्रेशन होते हैं, So during their meditation, the vibrations that are emanating from them, तो उससे जो है मकान के नेगेटिव एनर्जी मकान के बाहर हो जाती है। and the negative energy in the house also is diminishes. तो इस प्रकार से वाइब्रेशन मेडिटेशन करने से हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी। So Swamiji is saying that through vibrational meditation also you can remove Vastu defects in your house and make the house where you live in positive. And this is that. Okay, great. All right, so I think we should probably tell the viewers a little bit about the history of Vastu and how did it become a science? Yeah. How is it a science? Yeah, this is very good question. वास्तु की हिस्ट्री जो है वो हमारे पुराणों में लिखी हुई है। The history of Vastu is written in the Puranas or the old scriptures. Like Matsya Puran and Garuda Puran. Like the Matsya Puran and Garuda Puran. और इसके अलावा वेद का एक उपवेद है, स्थापत्य वेद, उसमें भी ये बातें आई हैं। And is also written in the Vedas and also the Upavedas. इसमें ये कहा गया है कि एक बार भगवान शिव अंधक नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे। One time, Lord Shiva was fighting with one of the demon called Andhak Rakshas. उस समय उनको काफी मेहनत करनी पड़ी। And he was fighting. Lord Shiva was fighting very hard. तब उनके माथे से पसीने की कुछ बूंदें गिरी। From his forehead, few drops of sweat fell on the earth. और उस बूंदों से वास्तुदेव की रचना। And from there, from those sweat
falling on the earth, Vastudev was born. और वो वासुदेव काफी बलवान थे And Vastudev was very powerful. और उन्होंने सभी लोगों को कंट्रोल में कर लिया था। He started controlling everyone. इसके बाद देवता लोग उनके ताकत को देख के काफी परेशान हुए And all the celestial beings and divine beings were afraid of his power. तब उन्होंने जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की And they prayed to Lord Brahma कि हमें इन वास्तुदेव से कैसे कंट्रोल करने का ढंग बताइए। and they prayed to Lord Brahma and said, please help us how we can get relief from this Vastudev. तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि इन्हें पृथ्वी पे पेट के बल हटा दो। So Brahma ji said, all of you hold him and push him to the ground on his face down. तब उसके बाद उन लोगों ने जो 45 देवताज थे And all the 45 celestial beings did what Brahma told him. और पृथ्वी पे स्थापित किया। स्थापित करने पे उनका सर जो है अब हाथ ईस्ट की ओर रखा गया। So the way when they pushed him on the Vasudev on the earth, his head was in the northeast zone. तो इस प्रकार से फिर वो उन वासुदेव ब्रह्मा जी के पास गए। So Vasudev pleaded to Lord Brahma कि आप लोगों ने हमारी क्या गलती थी जो आप लोगों ने मुझे इस प्रकार से स्थापित किया। and he said, why did you put me on this earth like this? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। Lord Brahma said, there's no fault of yours. हम तुमको आशीर्वाद देते हैं And we bless you कि आज के बाद से from this day onwards. ये सारे देवता आपके साथ में घरों में या प्लॉट में रहा करेंगे। So Brahma ji blessed him and said, all the 45 celestial beings will live with you in the enclosed space where you are on the earth. और बिना आपकी पूजा किए और आपके सिद्धांतों का पालन किए, and without following your principles and without praying to you Vastudev, कोई भी मनुष्य सुख समृद्धि और शांति नहीं प्राप्त करता है। and no human being will attain wealth and prosperity and happiness. बस उस समय से ये more than 5,000 ago. And then also Brahma ji also lived along in the center of the place, and this has been more than 4,000, 5,000 years ago. तब से वास्तु प्रिंसिपल स्टार्ट हुए, तब से, and that's the time when Vastu principles started. और इसका साइंटिफिक वैल्यू भी है। And there is a scientific value also. क्योंकि हमारे पुराने जमाने में जितने भी स्क्रिप्चर होते थे, पुराने जमाने में जितने भी शास्त्र होते थे, and in the olden days whatever the scriptures were there, तो उसको हमेशा देवी देवता से जोड़ के रखा जाता था। and all the scriptures were studied along with the celestial beings. लेकिन उसका साइंटिफिक भी महत्व होता था। There was a scientific principle behind it. होता है ये है कि हमारा पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण का चक्र है। गुरुत्वाकर्षण। Oh, okay. There is a magnetism around the earth. और ये वास्तु मेन मैग्नेटिक पर ही आधारित है। And the Vastu principle also based on the magnetism of the earth. और चूंकि हमारी बॉडी भी एक मैग्नेट है। And our body is also a magnet. तो ये और हमारे जो हवा का फ्लो होते हैं वो भी एक प्रकार से हम एक प्रकार से हमारी एनर्जी को हमारे पास में लाते हैं। And also the air surrounding also bring us positive waves of energy. तो वास्तु इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे बना है। And scientifically Vastu principle also based on these principles. और ये हमारे दिमाग में हमारे ब्लड को बहुत अधिक प्रभावित करता है। And these principles affect our head and also the blood flowing through us. Not the mind.
mind and also the blood. also the तो ये पूरी तरह से साइंटिफिक So these have a scientific basis. Okay, great. So Swami, in terms of your wish for the future, what is it that you would like to see happen in this country and also around the world in reference to how Vastu is being used or implemented? Do you have a wish? आपको अगर कोई विजन है या कोई आपको इच्छा है कि इस देश में और बाकी देश में वास्तु को लेकर के क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपके विजन क्या है? एक्चुअली हमारे मन में तो वास्तु और के लिए पूरे विश्व में एक बड़ा उत्साह है कि पूरे विश्व वाले इसका फॉलो करें. Swamiji's main wish is that everybody follow the Vastu principles. क्योंकि ये मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देखा है. Swamiji has seen with his practical experience कि ये बहुत अधिक ना इफेक्टिव है. This is very effective way of improving our lives. इसीलिए मैं पूरे वर्ल्ड में घूम रहा हूँ इसको लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए. So Swamiji is propagating Vastu principles by coming to different areas in the world. हमारे मन में ये है कि अगर आप कोई मकान बनाया जाता है या कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, so if you are constructing any house or any building, उसमें पैसा लगता ही लगता है. so you always put some resources and money. तो अगर वही कंस्ट्रक्शन वास्तु के अकॉर्डिंग करा लिया जाए तो भी पैसा तो वही लगना है. So if you do according to Vastu also, you will have the same resources put into it. तो क्यों ना वास्तु के अकॉर्डिंग बना करके अपने घर में शांति और हमको सफलता प्राप्त करें. So Swamiji asking all of you, why not integrate Vastu principle, put the same resources what you are putting now, and gain all the abundance and health and wealth and resources for a happy life. क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क की तंत्रिकाएं So our mind and all the veins in our head, is governing by the universe planets. and they're all governed by the universal planets. तो अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग हमने निर्माण किया, So if we construct according to Vastu principles, तो ये ब्रह्मांडीय ग्रह नक्षत्र जो हैं ये हमको सपोर्ट करें. and all the planetary combinations will support us, तो निश्चित रूप से हमको हमें प्रोग्रेस हो. and definitely we will all progress. तो हमारा यही विजन है कि दुनिया में सब लोग कोई भी निर्माण करने के पहले वास्तु. So Swamiji's wish is that everybody who is constructing new construction follow Vastu principles and reap the benefits. और हमें ऐसा भी हमने पेपर्स वगैरह में न्यूज़ पेपर्स में पढ़ा है कि अमेरिका में काफ़ी फॉलो भी हुए. Swamiji also has read that in US some people are trying to follow Vastu principles. तो हमारे लिए खुशी की बात है. Swamiji is saying that's a very wonderful thing and he is very happy about it. Oh, great, awesome. Okay, so I think we're coming to the end of the show here. So what I wanted to request before we end the show is I was requesting a blessings for Swami. So I don't know how long that takes. So I'm still a request for a blessing. अपने लिए blessings मांग रहे हैं. आपका आत्मा और आपका सोर्स पहले से ही कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस से कनेक्ट है. Swamiji is saying your soul is already connected to the divine consciousness. तो इसलिए आप तो खुद आपके तार सिल्वर कॉर्ड आपका पहले से ही पावर स्टेशन से कनेक्टेड. Your silver cord is already connected to the
power station of the higher divine consciousness. लेकिन इसके बाद भी हम आपका रेस्ट कर रहे हैं. So, besides that, also Swamiji's blessing that always you be in that higher consciousness. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी चेतना जो है वो और अधिक ऊंचाइयों पर आएगी. Swamiji is hoping and blessing and that you reach the highest consciousness. Yes. Yeah, thank you very much. All right, so I think your work is very, very important because it has a lot to do with our environment, and I think we have done a lot of damage in the past regarding our environment, and I think what you presented here today in regards to Watsu, the science, and also all the things that you talked about and recommendations that you have made, that we can live a happier and more fulfilling life based on what we are desiring. I think everybody wants to live a happier and more fulfilled life. This is certainly a way to achieve that, and it certainly should be part of our evolution as humanity. So I thank you very much for your service and doing what you do, I know very well every day. And thank you for being on Conscious Evolution Media Network, and I hope we will see you very soon. Thank you so much. Thank you. And for everybody else, this was a special edition of the Mind, Body, and Soul television show on Tuesday evening, and we will see you on our regular time, always on Thursday at 2 p.m. Denver time, which is 4 p.m. Eastern and 1 p.m. Pacific. Thank you very much, and I love you all, and I will see you on Thursday. Bye-bye.